वेल हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ऑयल पेस्टल। एंड आज मैं आप लोग के लिए ऑयल पेस्टल का रिव्यू, उसे यूज करने का टेक्निक एंड एक अच्छा सा कैरेक्टर का ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो में एंड तक बने रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ये रहा मेरा गैलरी ऑयल पेस्टल, जिसमें हम लोग को टोटल 24 शेड्स कलर देखने को मिलेगा। एंड बॉक्स के पीछे देखे तो गैलरी ऑयल पेस्टल वालों ने बहुत सारे टेक्निक बताए, जैसे कि स्क्रैपिंग, ग्रेडिएशन, ब्लेंडिंग, स्टिफिंग, ओवरलेइंग कलर्स। इस तरह के टेक्निक से आप लोग ऑयल पेस्टल से ड्राइंग बना सकते हो। एंड इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मुझे Amazon पे 1000 पे पड़ा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। एंड मैं जानता हूँ ये ऑयल पेस्टल आप लोग के लिए कॉस्टली होगा, बट अभी आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग ऑयल पेस्टल में हाईली स्किलफुल हो जाओगे तब लेना। नाउ चलो इसे ओपन करके देखता हूँ। सो ये रहा इसका कवर एंड ये इसका बॉक्स जिसमें ऑयल पेस्टल है। तो इसे मैं साइड कर देता हूँ। एंड गाइस, मैं इसे ओपन करने से पहले बता देता हूँ, मुझे ये ऑयल पेस्टल इतना पसंद आया कि मैंने इसे पहले भी यूज किया हूँ। नाउ इस ऑयल पेस्टल को कैसे यूज करते हैं बताता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। सो गाइस, ये रहा लेफ्ट साइड में डोम्स ऑयल पेस्टल एंड राइट साइड में गैलरी ऑयल पेस्टल। नाउ मैं अब कंपेयर करके देखूंगा सबसे स्मूथ ब्लेंडिंग किसकी होती है, डोम्स की या गैलरी ऑयल पेस्टल की। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट कर रहा हूँ पहले डोम्स ऑयल पेस्टल से। नाउ गैलरी ऑयल पेस्टल से ड्रॉ कर रहा हूँ। नाउ मैं अपने फिंगर से ब्लेंड करके देखता हूँ। नाउ गैलरी ऑयल पेस्टल को ब्लेंड करने जा रहा हूँ। सो गाइस, डिफरेंस मुझे यह लगा कि गैलरी ऑयल पेस्टल में मुझे थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं लगाना पड़ रहा था, मतलब आराम से ब्लेंडिंग हो जा रहा था। वही बात करूं डोम्स की तो मुझे हद से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ा था, तब जाकर ब्लेंड हो रहा था। एंड नाउ मैं आप लोग के लिए एक एनिमे का ड्राइंग बनाने जा रहा हूँ, वो भी ऑयल पेस्टल से। सो उसका नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताना। सो लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे पहले से आउटलाइन बनाकर रखा हूँ। नाउ हम लोग ब्लैक पेन से आउटलाइन को ड्रॉ करेंगे। आउटलाइन ड्रॉ होने के बाद लेट्स स्टार्ट कलरिंग। Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, cause I don't wanna waste my time. Sometimes I don't wanna wake up, I feel tired in my bed. So कलर करने के बाद कॉटन बड से कलर को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। Let the drama unfold with my brain numb. सो आप लोग देख सकते हो ये वाला ऑयल पेस्टल कितनी स्मूथनेस से ब्लेंडिंग हो रही है, मतलब मुझे प्रेशर भी नहीं लगाना पड़ रहा था। This world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign. एंड आप लोग को लगे कलर आउटलाइन से बाहर जा रहा है तो आप लोग इरेजर से रब कर सकते हो। I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going every day's a bit closer. Highs and the lows feels like a roller coaster, it's never over. I gotta find a way to get inspired in this life. Stop looking out and start looking inside. Find what I love and take a little pride. Anything is better than complaining about life. I don't need help, I could do it by myself. No pain, no gain, I will go through hell. Do what it takes, I will break out of my shell. I'm never coming back, once I'm gone I'm out. Yeah, got me like ooh, watch me on the screen, you gon' see me making moves. You gon' see me scheme like I got something to prove. Working like a fiend, yeah I do just what I do. Got a purpose, got a view, turn my vision into truth. My dreams are becoming lucid. The more I work improving, the more I fight, keep moving.
I am not losing, pride keeps me. एंड अगर आप लोग के पास कॉटन बर्स नहीं हो तो आप लोग पेपर स्टम्प की भी मदद से ब्लेंड कर सकते हो. I feel tired in my bed, wanna lay up. Watch TV and step out, fake love. Let the drama unfold with my brain numb. Yeah, I'm still digesting everything that's going on, second guessing if this world is a place worth saving. I feel lost in this world as of lately. Give me a sign, will everything be alright? I need a sign, 'cause I don't wanna waste my time. I wish I knew if all of my dreams would come true. I wanna be free, I gotta find a way to believe. All I know is that if I give up then it's over, but if I keep going, So guys, are you ready for final result? give me a sign, will everything be alright? Okay, I need a sign, 'cause I don't wanna waste my time. So guys, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताना. एंड ये गैलरी ऑयल पेस्टल बाकी ऑयल पेस्टल से काफी इजीली ब्लेंड हो जाता है एंड मेरा फिंगर से भी इजीली ब्लेंड हो जाता है क्योंकि इतना सॉफ्ट ही है. सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. One day